हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे BPHCT 137 वेव्स एंड ऑप्टिक्स जून 2022 का क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव इज डबल बाय व्हाट फैक्टर विल इट्स एनर्जी चेंज। तो अगर एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया हमने तो एनर्जी कौन से कितने गुना चेंज होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर करेंगे तो एनर्जी क्वेश्चन नंबर 1 द एनर्जी E इक्वल्स टू होता है हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा। दैट इम्प्लाई E जो है वो प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ए इज एम्पलीट्यूड व्हेन एम्पलीट्यूड इज डबल देन तो टू टू ए हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 4a² ठीक है ना। तो देयरफॉर ये डबल देन द एनर्जी विल बी 4 फैक्टर, ठीक है ना, 4 गुना हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1b is it correct to say that on a standing wave formed on a steering fixed at both ends, we observe antinodes at the fixed ends? Justify your answer. तो नोट्स देखेंगे जब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो वो 0 हो, तब हम देखेंगे नोट्स, और डिस्प्लेसमेंट अगर कुछ टर्म आ जाए तो वहां पर हम देखेंगे एंटीनोड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट्स जो है वो फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट होता है 0, तो इन दोनों पॉइंट में हम नोड्स देखेंगे। तो here the in the end points the end points are fixed, therefore the displacement is 0. Then we observe node at the end points. उसके बाद क्वेश्चन नंबर C, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन द fringe often using a prism and a layered mirror। तो इसका आंसर आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन बाय प्रिज्म एंड लेयर्स मिरर फ्रिंज। तो यहाँ पर आ जाएगा मेनली डिफरेंस, यहाँ पर 3 डिफरेंसेस का 2 लिख दीजिएगा। इन बाय प्रिज्म द कंप्लीट पैटर्न ऑफ fringe is often and in layered mirror ordinarily only a few fringes on one side of the central fringe is visible. And number 2, in biprism, the central fringe is bright while the layered mirror it is dark, ठीक है ना। ये आ गया 2 डिफरेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर D, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। तो ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी का देखिए, ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी का यहाँ पर प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी स्टेट दैट ए रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट retracts its original path if its direction is reversed, provided there is no absorption of light, ठीक है ना। ये है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर E, what is the path difference between the wave emanating from two consecutive transparent zone of zone plate?
तो ये आ जाएगा यहाँ पर λ/2। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ एमिटिंग ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट टू consecutive जोन इज π/2। तो इसको अगर ये 1 मार्क्स के लिए सही था, 2 मार्क्स के लिए मुझे थोड़ा सा कम लगा है। अगर यहाँ पर भी मुझे तो नहीं दिखा है कहीं पर इसका जो ये जो λ/2 कैसे हुआ ये लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को मिल जाए तो वही करना। यहाँ पर मैंने समरी से ये लिया है। अगर इस चैप्टर में ये है ब्लॉक 3 एंड यूनिट नंबर 9 में थोड़ा सा देख लीजिएगा ये π/2 किस तरीके से, सॉरी λ/2 किस तरीके से आया है, वो अगर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर F, एक्सप्लेन वेरीफाई हाउ ग्रेटिंग आर यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पर है diffraction grating is a widely used optical components in spectroscopy. The spectroscopy is the study of emission and absorption of light by matter. Every element of the periodic table under suitable conditions emitted light of characteristic wavelength called spectra. The technique of spectroscopy involve spreading the light emitting by matter into its consequent wavelength. It is similar to तो यहाँ तक ही लिख लीजिएगा वेवलेंथ तक। ये इतना तक ही आंसर करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद ड्रॉ ए एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ए 3 लेवल पंपिंग स्कीम इन ए रूबी लेजर। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पर 3 लेवल पंपिंग स्कीम दिया हुआ है रूबी लेजर में, पर ये जो है यहाँ पर एनर्जी डायग्राम है या नहीं ये तो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। तो यही कर दीजिएगा, क्योंकि एनर्जी डायग्राम इन रूबी स्कीम, सॉरी रूबी लेजर एंड यहाँ पर 3 लेवल पंपिंग स्कीम, तो यही मतलब डायग्राम मिला मुझे। तो ये तीनों डायग्राम कर दीजिएगा, डायग्राम A, B एंड C। 3 लेवल पंपिंग स्कीम ABC तीनों डायग्राम होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, लिस्ट 2 बेसिक डिफरेंस बिटवीन द होलोग्राम एंड नॉर्मल फोटोग्राफी। तो द टेक्निक ऑफ होलोग्राफी differ from the ordinary photography in 3 aspects। तो यहाँ पर हम 2 डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1, फर्स्टली द ऑर्डिनरी फोटोग्राफी, द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज received on a photographic plate or other image format device with the help of lenses. Amplitude of the light wave reflected from each point of the, sorry, of the object is recorded at a corresponding point on the photographic plate. On the other hand, the holography, no lens or other image formatting device is needed, and hence as such no image is formatted on the hologram. Here essentially an interference pattern due to the light reflected from the object and the reference beam is obtained. And secondly, number 2, for obtaining hologram, coherent light is used, whereas in case of normal photography no such special source of light is required. The need of coherent light is due to the fact of the hologram is the interference pattern. And thirdly जो लिखा हुआ है देखिए, in holography it is a set of mirror is used to render the reference of object beam on the photographic plate। तो यहाँ पर दोनों लिख लीजिएगा, या फिर जो 2 आप लोगों को सही लगे वही लिखिएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया है अभी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, 5 अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही।